हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज में। आई होप आपकी स्टडीज़ अच्छी चल रही हैं और आप अपना टाइम प्रॉपरली यूटिलाइज कर पा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज मैं साइंस के एक टॉपिक लाइट से रिलेटेड बेसिक बातें शेयर करूंगा। मेरी आपको यही एडवाइस रहेगी कि आप एंड तक वीडियो को जरूर देखें ताकि कुछ भी पोर्शन मिस ना हो जाए। सो बी विद मी एंड लेट्स स्टार्ट। लेट अस फर्स्टली डिफाइन लाइट. Light is a form of energy that enables us to see objects from which it comes or from which it is reflected. We detect light with our eyes but also need a source of light to make objects visible. स्टूडेंट्स, इसको पहले समझते हैं। आइज सेंस ऑर्गन की तरह तो काम करती हैं, पर आइज से हम तभी देख पाएंगे जब हमारे आसपास कोई लाइट का सोर्स होगा। अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, हाउ कैन वी सी ऑब्जेक्ट्स? तो इसका आंसर ये होगा, व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स अवर आईज वी कैन सी दैट ऑब्जेक्ट. द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज रफली टेकन एज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इसको हम कुछ कुछ ऐसे समझ सकते हैं, एक सेकेंड में लाइट 7.5 टाइम्स अर्थ की सरफेस के चक्कर काटती है. सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन हाउ फास्ट इट इज. Now let's talk about ray and beam of light. Ray. A ray of light is the straight line along which light travels. Students, we cannot see light itself, but when we need to specify path of light in our diagrams, we need to draw imaginary line. These imaginary lines which represent the path are called rays. The arrowhead put on the straight line tells us the direction in which light is traveling. Now let's talk about beam. A bundle of light rays is called a beam of light. स्टूडेंट्स, जैसा कि अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को हम आर्मी बोलते हैं, इसी तरह अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज को हम बीम कहते हैं. नाउ बीम is of further three types. First, as you can see below, parallel beam of light. In this case, all the light rays are parallel to each other and they are moving in one single direction. Second is convergent beam of light. इस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, सारी की सारी लाइट रेज दे मीट एट वन कॉमन पॉइंट. इसको हम कन्वर्ज होना भी बोलते हैं. सो दिस इज अवर कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट. थर्ड इज डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट. इस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, सारी की सारी लाइट रेज एक पॉइंट सोर्स से बाहर की तरफ निकलती हैं. इसको डाइवर्ज होना भी बोलते हैं. सो दिस इज अवर डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट. अब हम लाइट की नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, there are two widely accepted theories which are used to explain the nature of light. These are wave theory of light and particle theory of light. Let's discuss them one by one. First is wave theory of light. According to wave theory, light consists of electromagnetic waves which do not require any material medium for their propagation. You can see below there are two oscillating electric and magnetic fields. Both are perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of propagation. This is what electromagnetic wave looks like. इसको थोड़ी देर में फिर से और डीपली समझेंगे. नाउ कमिंग बैक अगेन टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट. कुछ फिनोमिना हैं जैसे कि डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट. They can only be explained if light is considered to be of wave nature. यहाँ पर हम दो केसेस देख रहे हैं. When a white beam of light is passed through a prism, it splits up into 7 different colors, each having particular wavelength. Similarly, second case में हम ये देख रहे हैं कि when an atom gets excited by some external source, electron leaves its shell and jumps to higher shell. While coming back to its respective shell again, it emits light of particular wavelength. So this is all about wave theory of light. Second is particle theory of light.
According to particle theory of light, light is composed of particles which travel in a straight line at a very high speed. स्टूडेंट्स, जैसे कि किसी भी मैटर के एलिमेंट्री पार्टिकल को हम एटम बोलते हैं, उसी तरह लाइट का भी जो एलिमेंट्री पार्टिकल होता है उसको एक स्पेशल नेम दिया गया है और लाइट के इस एलिमेंट्री पार्टिकल का नाम है फोटोन. The phenomena of reflection, refraction, casting of shadows of objects, these are all can be explained only if light is thought to be made up of particles. As we can see, white color photons are passing through prism. There occurs splitting of white color photons to 7 different colorful photons. Secondly, we can also see here when an excited electron comes back to ground state, it emits photon of particular color. So this is all about particle theory of light. क्योंकि दोनों थ्योरीज पूरी तरह लाइट की नेचर को एक्सप्लेन करती हैं, तो इन दोनों को क्लब करके न्यू थ्योरी डेवलप हुई जिसको हम ड्यूल नेचर ऑफ लाइट कहते हैं. इसको क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट भी बोला जाता है. According to this theory, light exhibits the properties of both waves and particles. In other words, light can behave as both particle as well as wave. जैसा हमने पहले वेव थ्योरी ऑफ लाइट में पढ़ा कि लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में समझते हैं. The waves traveling with velocity of light and consisting of oscillating electric and magnetic fields perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of their propagation are called electromagnetic waves. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रेड कलर में यहाँ पर हम ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहे हैं और ग्रीन कलर में ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड शो हो रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है अलोंग वाई एक्सिस. ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर हैं, मींस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इफ वी सपोज जेड एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये इस जेड एक्सिस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इसके भी परपेंडिकुलर हैं. सो दिस इज अवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. एग्जाम्पल्स क्या होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की? विजिबल लाइट, इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव्स एटसेट्रा. दीज आर ऑल क्लासिफाइड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. Now let's talk about object. Anything which gives out light rays, either its own or reflected by it, is called an object. A bulb, a candle, our face, trees, etc. These are all objects. Objects can be of two types. Very small objects जिन्हें हम point objects बोलते हैं, very large objects जिन्हें हम extended objects भी बोलते हैं. Point objects are represented by a dot, whereas extended objects are represented by an arrow pointing upwards. Now let's understand what is an image. Image is an optical appearance produced when light rays coming from an object are reflected from a mirror or refracted through a lens. An image is formed when light rays coming from object meet or appear to meet at a point. So जैसा कि आप देख रहे हैं, when we look into the mirror, our face acts as an object, whereas whatever we see in the mirror is just our optical appearance and it is our image. While watching movie in the cinema hall, we see the images of actors and actresses. Now let us discuss about various types of images. The very first type is real image. The image which can be obtained on a screen is called a real image. A real image is formed when light rays coming from an object actually meet at a point after reflection from a mirror or refraction through a lens. Usually, concave mirror and convex lens form real images
which are always inverted. As you can see below, there is a box-like device called pinhole camera. इसकी ट्रांसलूसेंट स्क्रीन पर आप ट्री की रियल इमेज बनती हुई देख पा रहे हैं. Convex lens is also showing real image because this image is inverted with respect to object. A movie in cinema is collection of lots of images जो 24 फ्रेम्स पर सेकंड की स्पीड से चलती हैं, जिससे हमें एक्टर एक्ट्रेसेस परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं. क्योंकि इन्हें स्क्रीन पर ऑब्टेन करते हैं तो ये भी रियल इमेजेस कहलाती हैं. Second type of image is virtual image. The image which cannot be obtained on a screen is called virtual image. A virtual image is formed when light rays coming from an object only appear to meet at a point after reflection from a mirror or refraction through a lens. A plane mirror, spherical mirrors and concave lens can form virtual image. इसका characteristic क्या होता है? A virtual image is always erect with respect to an object. तो आज के लिए इतना ही. आप फिर से वीडियो चलाकर पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सौरभ जेटली ट्यूटोरियल्स. गॉड ब्लेस यू ऑल. कीप लर्निंग समथिंग न्यू एवरी डे and be in high spirits always.